Labeen. Assalamu alaikum and a very good morning and welcome back to all the Janarian families that we have who have joined us today again. So today is the second day of our webinar, Stay Home, Stay Productive. And inshallah, I'm sure it was very enlightening, the sessions that we had yesterday, right Mehreen? Yes, it was great to see how the learning developed, and the tips given by Franklin Covey team were like it can do wonders. So, inshallah, we are looking forward to a fruitful session today as well. Great. So before we proceed further and have a little review discussion, I'd just like to sort of remind everyone, including myself, about the guidelines. And that would be that, like yesterday, everybody would be muted. I'm sure you would have questions, so you're welcome to post them in the chat box, and inshallah, they will be addressed. And if you are experiencing low bandwidth, it would be advised to keep your cameras off. So, Mehreen, what take did you take from yesterday's session? Did you have any Well, discussion or reflection? I was discussing with my family, especially my husband, since these pandemic days are creating a lot of stress on everyone. So the idea of writing down your stresses and working on them accordingly by like getting engaged into fruitful activities, it helps a lot. I And totally then agree. he agreed to it that yes, you're right. Yeah, and I totally agree. And, you know, I was also reflecting that we don't actually think of poor sleep as a reason for stress. We think कि हमारी sleep cycle इतनी ही है, so that's enough sleep for us. But I realized that probably that is another major reason for our stress. So now I've, you know, sort of designed a plan with my family that we're going to probably, not probably, definitely, inshallah, be sort of monitoring our sleep cycle and seeing how many hours of sleep, especially रात की नींद, and you know कि हमारे मजहब में भी Yes. उसकी बहुत importance है. So making sure that we get that sleep at night, inshallah. So, and what was the other thing that you recall? Let's see, from the session. He Well, spoke the about, other thing, yes. he spoke about Mr. Niazi shared a video regarding it was about empathy and showing empathy to others and being a role model for your kids, for your families. So it has a positive effect and impact on them as well. How to empathize with people and putting yourself in someone else's shoes, that what they are going through is of utmost importance. Yeah, the part where he said to listen with the eyes, ears, and heart, that really Yes. connected well. So that was another. And the last major point was, you know, that if we really want to see any change, then where should the change be seen? It was like if it's a long-term change, then we really have to work on our paradigms, changing of mindsets instead of our behaviors take us to like short-term goals, and then when you change your mindset, it has a like vast impact. Yes, you know, for sustaining that change, I think mindset is where we really need to make that change happen. Exactly. So, all right, we're going to be launching a poll right now, and it's going to be having questions. So please, it'll be on for inshallah 1.5 minutes, and you may read through and uh, post your choices. So I'm going to be launching it now. All right. Can you see the poll, Mehri? Yes, Miss Naveen, it's Yes. visible. um, Jazakallah. So if the participants could read through and maybe we'll just go through briefly. Right, Ms. Marine, if you could Okay, start there are off. 4 questions in it. Question number one is asking about, can you identify the root cause of your stress? So you need to click on like if you you agree to it, always, never, react and realize later. How do you relax?
So it's all up to you, whatever you select here. And then the third question is, if you want to make minor changes in your life, work on your behavior. But if you want to make significant quantum breakthroughs, work on your paradigms. Have you ever experienced a paradigm shift that has altered how you view others? So please answer these questions. So 30 seconds gone, another minute to go, inshallah. And you know, these are really questions that we could reflect on even later on, right, Ms. Mehreen? Yes, exactly. It will help us to make changes in our lives and our daily routines as well. I really like the options for how do you relax, you know, gardening, reading. Yes, the gardening, reading, and following your hobbies, and then boosting your immunity by combating stress by like eating habits as well, less sugar intake, and eating healthy food helps a lot. True. And we can see that a lot of these habits have been actually, you know, they're part and parcel of being a Muslim, you know, following the Sunnah. We could see all of these habits there in our Prophet's daily routines, alhamdulillah. So we're really blessed that way as well. Alhamdulillah. All right, so we're going to be ending the poll soon. Another 10 seconds. And I can see a lot of people writing done. Jazakallah. So another 2 seconds and so now I guess it's over to the Franklin Covey team. I'm going to share the results and then inshallah Mr. Niazi and his team will take the session forward. Niazi Saab, can you see the results? जी रिजल्ट्स जो हैं वो एज एक्सपेक्टेड वैसे ही हैं अराउंड द ग्लोब कुछ इससे मिलते जुलते ही रिजल्ट्स हमें मिलते हैं बट जो सबसे बड़ी ख़ास बात है कि पैराडाइम शिफ्ट को वो क्वांटम चेंज के लिए 89% realize के if they want to bring a quantum change in their behaviors they need to change their paradigms. अगर बहुत बड़ी तब्दीली लाना चाहते हैं ज़िंदगी में तो अपने पैराडाइम्स पे काम करना होगा ये बहुत बड़ी रियलाइजेशन है और जैसे हम अपने स्ट्रेस को तो 57% सेइंग दैट कि हम रिएक्ट करते हैं एंड देन बाद में रियलाइज करते हैं कि ओहो एंड 36% सेट के जी हमें मालूम होता है कॉज ऑफ स्ट्रेस एंड 6% सेज दैट दे नेवर नो द कॉज ऑफ स्ट्रेस तो रिजल्ट्स हमने देख लिए इंशाल्लाह अब आगे बढ़ते हैं हम आगे बढ़े यहाँ से मैडम महरीन देख रही है वहाँ सर जी जी नियाजी साहब we can start off with our day 2 session inshallah. So we'll start. Okay, thank you. We'll start with one video. This is a promise from 7 Habits. ये वादा है 7 Habits की तरफ से हर उस फर्द के साथ जो 7 Habits को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेगा, अप्लाई करेगा
اور اس کو کیا فوائد حاصل ہوں گے اس کو ہم آپ سے شیئر کرنے لگے. اپنا کیمرہ میں آف کر رہا ہوں تاکہ بینڈ وڈتھ میں کوئی ہمیں پرابلم نہ آئے. Habits are powerful forces in our lives. They determine our level of effectiveness or ineffectiveness. The purpose of the 7 Habits of Highly Effective People is to help you lead your life in a truly effective way. They represent a proven process of personal and interpersonal growth that can have both immediate and lasting impact. I'm asked fairly often, are the 7 Habits of Highly Effective People as relevant today as when you first wrote about them? My answer, the greater the change, the more difficult the challenges, the more relevant the habits become. Why? Because they are based on principles of effectiveness that endure. As you learn about the 7 habits, I invite you to apply them to the specific challenges and opportunities you are facing. Watch what happens. Your effectiveness will grow. Your influence will expand. Your relationships will improve. ہاں جی. تو اس پرومس میں آپ کو کیا نظر آیا کہ 7 ہیبٹس کو اگر ہم اپنی زندگی میں اپلائی کریں گی تو کیا کہاں کہاں فائدہ ہمیں حاصل ہوگا؟ جی کہاں کہاں ہمیں زندگی میں فائدہ حاصل ہوگا اگر ہم اسے اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے؟ آرگنائزڈ پرسنل اینڈ پروفیشنل لائف میں، بالکل ہر فیلڈ میں. جی بالکل. کیا یہ آپس کے تعلقات کو بہتر کرنے میں بھی استعمال ہو سکتی ہیں؟ بیلنسڈ کمیٹیڈ یس ول گین ہیپینس ریلیشن شپس. ویری گڈ ایکسلنٹ. ہم اپنی لرننگ کو سٹارٹ کرتے ہیں جہاں ہم نے اس کو چھوڑا تھا. اب آپ سے ایک سوال ہے کہ کچھ کام ہم کل آپ کے حوالے کیے تھے، کیا آپ میں سے کوئی کر پایا اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنے گھر میں؟ جی یس. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ کر پائے؟ ٹیک اوے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، کتنے پیرنٹس اپنے گھر میں کر پائے؟ ایوری تھنگ فرام ریلیشن شپس ٹو پروفیشنل لائف. جی اب سوال تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے. آئی ڈڈ ناٹ گیٹ. چلیں کوئی بات نہیں. آج کی لرننگ سے یس ود مائی ہسبینڈ وی انٹروڈیوس آرٹس. یس آئی ڈڈنٹ گیٹ. اوکے آج ہم آپ سے دوبارہ شیئرنگ کر لیں گے اور آج ہم آپ سے کچھ اور ریسورسز بھی شیئر کریں گے جو آپ اس سیشن کے بعد استعمال کر سکتے ہیں اپنے فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ. ہم نے کل پیراڈائم اور پیراڈائم شفٹ کی بات کی تھی. آج ہم آپ کے ساتھ ایمپیتھیٹک لسننگ کی بات کر رہے ہیں. واٹ از دا میننگ آف ایمپیتھی؟ جی ایمپیتھی کا مطلب کیا ہے؟ یس واٹ از دا میننگ آف ایمپیتھی؟
listening actively, yes, और एहसास, जी, put yourself in others' shoes and feel with your heart to feel what others are feeling in their situation. चलें, आज हम आपके साथ शेयर करते हैं दो अंदाज, बात सुनने के दो मुख्तलिफ अंदाज. जब हम लोगों के साथ बैठते हैं और उनकी बात सुनते हैं तो दो अंदाज होते हैं जो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर. उनमें से एक जो है वो ऑटोबायोग्राफिकल लिसनिंग कहलाता है और दूसरा जो है वो एम्पैथेटिक लिसनिंग है. दोनों अंदाज हम देखेंगे और देखते हुए आपने खुद अंदाजा करना है कि आप अपने घर में किस लिसनिंग के कौन से मॉडल को इस्तेमाल करते हैं. एक सेइंग है राल्फ रॉटमैन की, व्हेन आई आस्क यू टू लिसन and you feel you have to do something to solve my problem, you have failed me. यानी कि जब मैं तुम्हें कहूं कि मेरी बात सुनो और तुम्हें लगे कि तुमने कुछ करना है मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, मेरा मसला हल करने के लिए, तो तुमने मुझे फेल किया. है ना ये अजीब सी बात. And listen, all I ask is that you listen. सुनो, मैंने तुमसे सिर्फ इतना कहा है कि मुझे सुनो. Not talk or do, ना बोलो और ना कुछ करो, जस्ट हियर मी, सिर्फ मुझे सुनो. तो ये आज की हमारी गुफ्तगू, और ये बड़ा अहम मामला है, लोगों को सुनना, और ये एक मामला है बहुत ही अहम जो हमारी ज़िंदगी में, हमारे रिश्तों में, हमारे मामलात में डायरेक्शन का तयन करता है. तो पहले हम ऑटोबायोग्राफिकल लिसनिंग को एक्सपीरियंस करेंगे एंड देन हम एम्पैथेटिक लिसनिंग को एक्सपीरियंस करेंगे. तो लेट्स एक्सपीरियंस ऑटोबायोग्राफिकल लिसनिंग. आपने देखना है इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, इसमें क्या चीजें होती हैं और कहाँ पर ये मौसर है और कहाँ पर ये ही रास्ते की रुकावट बन जाएगा अगर हम ऑटोबायोग्राफिकल लिसनिंग इस्तेमाल करेंगे. One thing that gets in the way of meaningful communication is autobiographical listening. This means that we filter what others say through our own story, our own experiences, our biases, prejudices, and all of our values. You see, when I listen autobiographically, part of my story gets added to your story. And then when I respond, I base it on my own frame of reference. I might ask questions, or I might agree or disagree. I might decide it's necessary to counsel you, or try to solve the problem or fix the situation. So with the best of intentions, I can end up leading the conversation. And even worse, I don't hear what you're really trying to say. Autobiographical responses fall into 4 categories. Probing, asking questions. Evaluating, like agreeing or disagreeing. Advising, that is giving counsel. Or interpreting, or trying to figure a person out or to analyze them. But don't misunderstand. Autobiographical responses can be very appropriate, especially when the emotional bank account with another person is high. But when real understanding and clarity are needed, and when the problems are very emotional, autobiographical responses only get in the way. Watch the impact of autobiographical responses in the next segment. Doing your homework? What's the point? I'll never use it. Of course you will. Classical Greek drama. Not likely. No one gets anywhere without an education these days. Really? Joe's got a full-time job and he's already a manager. He has his own car, his own apartment. And me? I'm not that interested in this. But you're interested in this? Absolutely. I just think it's a waste of time to learn something you'll never use in the real world when I could be out working, getting a real experience, making money. So you want to quit? Think about your sister. She struggled in school, but she worked hard, and now she's the queen of college and probably become a brain surgeon and end global warming. Not my sister, Mom. I know it's hard right now, but all the effort will be worth it. When I was your age, you wanted to join a rock band and travel the world, but instead you chose hard work and
all this? You just have to hang in there. No, I don't. Fine. Quit. Move in with Joe. You think life is so wonderful, so easy? Maybe then you'd appreciate what you have here. Fine, maybe I will. Fine. जी, One thing that gets in the way of क्या लर्निंग रही हमारी और क्या हम जो घर में साथियों के साथ लिसनिंग करते हैं वो कुछ इससे मिलती जुलती तो नहीं है जो अभी हमने यहाँ देखी, और इसमें क्या 4 फैक्टर्स इन्वॉल्व थे? जी हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? Listening, जी empathy, जी नियाजी probing, साहब, जी, you're audible. autobiographical, we try to apply our story on others, a personal experience, questioning son was completing his mom's sentences. No, compare this listening to what we do at our home, at our office, with our friends. हम अपने दोस्तों के साथ, अपने दफ्तर में, अपने घर में क्या इस तरह की लिसनिंग में तो नहीं जाते कि हम एवेलुएट करते हैं, अपनी स्टोरी के साथ जोड़ते हैं, अपने एक्सपीरियंस के साथ जोड़ते हैं, खुद ही से फैसला करते हैं, खुद ही से ऐसे ही हम कर रहे होते हैं। तो कहते हैं कि जहां पर ट्रस्ट लेवल्स हाई हों, ये बड़ा अहम बात है कि जहां पर ट्रस्ट लेवल्स हाई हों वहां कॉस्ट बड़ी लो होती है। तो जहां ट्रस्ट लेवल हाई हो, जैसे बैंक अकाउंट है, अगर वो भरा हुआ हो, उसमें करोड़ों रुपए पड़े हों, तो वो 1-8 लाख रुपए का झटका बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन अगर पैसे हो ही नहीं तो आप बर्दाश्त कर सकता है वो लॉस? नहीं कर सकता। ऐसे ही जो हमारे आपस के ताल्लुकात हैं, हमारे आपस के रिलेशनशिप्स हैं, वहां पर अगर हम ये वाला सिलसिला इस्तेमाल करेंगे और ट्रस्ट लेवल यानी कि अकाउंट हमारा खाली है, तो यही तरीका हमारे लिए सबसे बड़ा ऐसे कहेंगे रास्ते की रुकावट बन जाएगा। दूसरा हमारी बात नहीं समझेगा, नहीं सुनना चाहेगा। और आपने देखा हो इस सारी वीडियो में बच्चे ने अपनी वालदा की बात सुनी नहीं, हर एक बात के ऊपर रिएक्ट किया उसने, हर बात के ऊपर उसने रिटेलिएट किया और आखिर में वो बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट होकर के बैठ गया। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं और देखते हैं कि उस मेथड में और इस मेथड में क्या फर्क है, और ये है एम्पैथेटिक लिसनिंग। Too often, we listen to others with the intent to reply. Empathic listening is an altogether different way of being. It is listening with the intent to understand, with the intent to get to the bottom of an issue. It's one of the most important habits any leader can practice. It's the key to effective results in interpersonal relationships, in teams, and in organizations. With no judgment, with no preconceived end in mind. We simply seek to understand. We temporarily suspend our view long enough to see the world through their eyes. Only people who are secure enough with themselves, those with a firm grasp of the private victory, have the capacity to listen in this way. It's important to note that empathic listening is not about agreeing or disagreeing. It's not about solving or fixing or figuring someone out. It's simply about understanding another's point of view and feelings. Watch what happens when you listen with the sole intent to understand. Doing your homework? What's the point? I'll never use it. Sounds like you're frustrated. I'm just sick of school. It's pointless. I mean, look at Joe.
dropped out of school, has a full-time job, has his own car, his own apartment, and I'm stuck here trying to decipher some ancient Greek play no one even cares about. So you think Joe's got it better? I mean, Joe's always bragging about how much better his life is now that he doesn't have to worry about teachers bossing him around or everyone telling him what to do. Joe's got a lot of freedom. Yeah, I mean, at least he's doing something. He has to work late nights so he can't hang out with us as much or go to the games, but at least he's going somewhere. So he's missing out on a lot, but at least he's moving forward. I just can't get this stuff. Dad's gonna kill me. You won't tell him, will you? You worried about what Dad'll think? It's just he always talks about how education is important and how he expects me to go to college, but how can I do that if I can't do this? So you're worried that if you don't understand this, then you won't get it in college either. I know I can't. They gave me a reading test, right? On the reading test, I scored on the 9th grade level, Mom. The 9th grade. I'm a senior. And that worried you. No matter what I do, I just don't get it. And I know Dad will know that I'm flunking out. I don't want to quit school, but I don't know any way out. You don't want to drop out of school, and you don't want to disappoint Dad. Right. So what will I do? I'm not sure. But I'm sure we can figure things out. All you need to do is reflect what they feel and say in your own words. And because it's so simple, we often underestimate its power. If you don't believe me, just try it tonight with someone important to you. Just simply reflect what they feel and say in your own words. Remember now, listen with the intent to understand, not to reply. It's the key to opening up people's hearts and getting to the real issue. जी, इसमें और पहले लिसनिंग स्टाइल में क्या फ़र्क महसूस किया आपने? और आखिर में बहुत ही ज़बरदस्त बात की उन्होंने. Listen to understand, not to reply. True listening, only listening. Yes, connection with listener. Argument नहीं था, बिल्कुल. और बहुत ही ख़ास बात इसके आखिर में उन्होंने कही. डॉक्टर स्टीफन आर कोवी ने बिल्कुल आखिर में एक बात कही. Yes, old generations used to do so. Same, yes, no reply. Intend to understand, understanding. First seek to understand, then to be understood. Very good. आखिर में उन्होंने कहा कि दिलों के ताले खोलने के लिए कुंजी का काम करती है, चाबी का काम करती है एक्टिव लिसनिंग. हम अपनी परेशानी भी उसी से शेयर करते हैं जो हमारी बात सुनता है और सुनने की इंटेंशंस के साथ सुनता है. Yes, you need to reflect what they say in your own words. Thank you. आपने आंसर नहीं करना उनको. और अगर कभी मशवरा देना पड़ जाए तो भी हम आई के मैसेज के साथ देंगे, यू के मैसेज के साथ नहीं देंगे कि तुम ऐसे कर लो. नहीं, मैं अगर तुम्हारी जगह होता या मैं समझता हूं कि ये हल ज्यादा बेहतर है. अगर हम लोगों को यू के साथ मशवरा देंगे कि तुम ऐसा कर लो, तुम्हारी राय ठीक है, तो ये विड्रॉल हो जाता है. आपने अकाउंट में से पैसे निकलवा लिए, आपके जो ट्रस्ट लेवल है उसमें से विड्रॉल है. और आपको जब बात सुननी है तो बॉडी लैंग्वेज को भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि
जो बॉडी लैंग्वेज है वो ज्यादा वजाहत से गुफ्तगू करती है एज कंपेयर टू आपके अल्फाज के. यस, तो हम आगे बढ़ते हैं. यहाँ अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं. यहाँ का आज आपसे शेयर करेंगे, मुझसे तो अभी शेयर कर देंगे हम, तो शेयर कर दीजिएगा ताकि वालिदैन अभी ही डाउनलोड कर लें इसको और उनको अवेलेबल हो जाए. जी ठीक है भाई. मुसूद साहब अभी शेयर करेंगे आपके साथ, अभी आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, कल की तरह के आपको वो ना मिला हो और आप जी. ये आ गया है. कल के जो टेक अवेज थे वो भी आपने शेयर हो गए. इसमें रिलैक्स है और पैराडाइम है, और अभी आज वाला भी थोड़ी देर में शेयर हो रहा है आपके साथ. जी, कहते हैं कि लिसन और योर टंग विल मेक यू डेफ. ये अमेरिकन, नेटिव अमेरिकन प्रोवर्ब है कि सुनो नहीं तो तुम्हारी जुबान तुम्हें बहरा कर देगी. तो हम एक वीडियो देखते हैं मिलकर के. ये हमारे इदारे के चीफ पीपल ऑफिसर हैं, इनका काम ही लोगों की बातें सुनना है, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं हमारे साथ. हम मिलके देखते हैं कि क्या कहते हैं. In my role as chief people officer, people come to me to solve their problems. So I have a lot of listening I need to do. People will spend 30 minutes, an hour in my office, and seriously, I'll spend 95% of the time just listening while they talk. The only talking I'm doing is saying things like, wow, I'm sure that's upsetting, or tell me more about that, or how did that make you feel? And yet, not all the time, but a majority of the time we'll finish the conversation and they will say, thank you so much. This was so helpful. Thank you for helping me solve my problem. I kind of smiled to myself thinking, well, you did all the problem solving. I just listened. Now, I have found it's not easy, but it's easier when you're not as emotionally attached to the situation. I certainly care about my colleagues at work, but I find a very different me when I'm at home with those in my family and my friends. We had a situation several years ago where one of our children wanted to move out. I was not excited about who she wanted to move out with, where she was going to live, and we had many discussions about this topic. My job took me out of the country for about 2 weeks, and when I returned, I learned she had in fact moved out. You can picture just how thrilled I was. She would come over for Sunday dinners, and after dinner, we would start arguing about this decision she had made. After several weeks of this arguing, I was at work one day after finishing another listening session thinking, why is it so easy for me to listen to the people here and yet not listen to my daughter at home? Well, that next Sunday, I made a conscious decision to do just that. We finished dinner. I'm sure she was expecting the typical argument. I was not going to give it. We went out on the back patio and sat on a porch swing, and I just listened. After what seemed like a long time of silence, she made a comment about Leslie not being able to pay her portion of the rent. Boy, did I want to say, I told you this would happen, but I bit a hole through my tongue, said, oh, I bet that's frustrating. Listened a little bit longer. She made another comment about one of the other roommates that was kind of annoying to live with. Again, resisted the urge to jump in. Now, this urge to jump in doesn't come from a bad place. We're human beings, we're fixers. We want to help solve. We love these people we're trying to help. But in this situation and many situations, people just need to feel understood. And on this day, I kept reminding myself of that. Until my daughter finally said, I'm not so sure this was such a good idea. But instead of jumping in and saying, I told you so, I said, I'm sorry, honey, how can I help you? And the floodgates opened and we were able to start resolving this situation.
Stephen Covey said, the deepest need of the human heart is to feel understood. Boy, for me and my daughter in this situation, those words could not have been truer. G. What about parents with high grit who are autobiographical listeners? Such parents never are willing to accept that the son doesn't have the same grit. Yes. इसके लिए you need to be proactive. As we promised at the start of this session, कि जैसे ही आप 7 हैबिट्स को अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे, और ये जो अभी सवाल है कि उन पेरेंट्स का क्या करें जो हाई ग्रेड के साथ हैं और वो ऑटोबायोग्राफिकल लिसनर्स हैं, तो इसके लिए हमें भी एक्टिव लिसनर बनना पड़ेगा. हमें भी हैबिट 5 को इस्तेमाल करना होगा. Seek first to understand, then to be understood, and then we need to be proactive, because हम ही जिम्मेदार हैं अपनी जिंदगी में होने वाले वाकयात के. चाहे वो कामयाबी हो, चाहे वो नाकामी हो, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम हैं. हमारे हालात और वाकयात नहीं हैं. जो हालात और वाकयात के हाथों मजबूर हो जाते हैं वो मुअस्सर लोग नहीं हैं, वो रिएक्टिव लोग हैं. वी नीड टू बी प्रोएक्टिव. हमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा. अब प्रोएक्टिव की मिसाल अगर आपने मेरे साथ आपने अगर सेशन अटेंड किया हो तो हमने वी हैड एन एग्जांपल ऑफ कोक एंड अ वाटर बॉटल. कोक की बोतल और पानी की बोतल का हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था. हमने पानी की बोतल की तरह रहना है कि कितनी ही आजमाइश आए, कितनी ही मुश्किल आए, हम कूल रहें और रिएक्ट ना करें. तो हमें 7 हैबिट्स को, और ये एंड 7 हैबिट्स डॉक्टर स्टीफन आर कोवी कहते हैं कि मैंने नहीं लिखी, मेरी इजाद नहीं है, बल्कि मैंने 200 साल और उससे भी ज्यादा के लिटरेचर का मुताला किया और उसकी सूरत में जो मुअस्सर लोग नजर आए उनकी जात में मौजूद खुसूसियात को जब मैंने देखा तो ये 7 आदतें इसी तरतीब में उनमें सब में पाई गई. और दुनिया के सबसे मुअस्सर तरीन फर्द कौन है? दुनिया का सबसे मुअस्सर तरीन फर्द कौन है? यस, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी इन 7 आदात से भरी पड़ी है. हमारे प्यारे नबी प्रोएक्टिव थे. हमारे प्यारे नबी हर बात में एंड इन माइंड का ख्याल रखते थे. हमारे प्यारे नबी फर्स्ट थिंग फर्स्ट. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और कुरान में जो हमसे मुतालबा किया गया है वो भी इन्हीं असूलों का मुतालबा किया गया है कि इन असूलों पर जो कायम रहेंगे वही कामयाब हैं. उन्हीं को ज़माम कार मिलेगा, उन्हीं को क़यादत मिलेगी, चाहे वो कौमों के मामले में हो, अफराद के मामले में हो. जो लोग असूलों के पासदारी करेंगे वही मुअस्सर रहेंगे और वही लीड करें. अल्लाह ताला की तरफ से उनको ये मिलेगा कि वो लीड करें. आगे बढ़ते हैं हम. इसके अलावा इस आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आप सबसे है, मैं शेयरिंग रोक रहा हूँ. इसमें इन्होंने एक बड़ी खास बात की लिसनिंग के हवाले से कि हम बाहर तो लोगों की बात बड़ी गौर से सुन लेते हैं, बड़ी तवज्जो से, और मशवरा भी बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन घर में हम ये नहीं कर पाते, अपने बहुत करीबी दोस्तों के साथ ये नहीं कर पाते. उसकी वजह भी बताई उन्होंने. वो वजह क्या थी? जी, वो वजह क्या है कि हम घर में अपने बहुत करीबी अफराद के साथ वो मामला नहीं कर पाते जो हम बाहर लोगों के साथ कर पाते हैं. हम लोगों की बात भी सुनते हैं, उनके मुरब्बी भी बनते हैं. यस, इमोशनल अटैचमेंट. क्योंकि हम
ان سینیریوز میں جن کے بارے میں میں سوال کر رہا ہوں ہم ایموشنلی اٹیچڈ ہوتے ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے حل بتایا کہ ہمیں اپنے آپ کو ایموشنل اٹیچمنٹ کو الگ کرنا ہوگا, ڈیٹیچ کرنا ہوگا ہمیں, اور پھر بات سننی ہوگی تو ہم بہتر سن سکتے ہیں. لیکن اگر ہم ایموشنلی اٹیچ ہو کر کے بات سنیں گے تو پھر آپ ایمپیتھیٹک لسننگ نہیں کر پائیں گے, بلکہ آپ کون سی کریں گے, کون سی لسننگ کریں گے جو ہم نے پہلے سنی تھی, آٹو بایوگرافیکل لسننگ. No strings of emotion attached. Yes, autobiographical. Thank you very much. جی ہم آگے بڑھتے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کرتے ہیں جس کا تعلق, اور یہ سوال ہم آپ سے بھی کر سکتے ہیں. تو ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ اپنے ذہن میں, آپ کے بہت سارے رولز ہیں, آپ والد ہیں, والدہ ہیں, آپ بہن ہیں, آپ بھائی ہیں, آپ بیٹی ہیں, آپ بیٹے ہیں, آپ کہیں پر باس ہیں اور کہیں پر آپ سبارڈینیٹ ہیں, آپ کہیں پہ دوست ہیں, کہیں پہ آپ کزن ہیں. یہ سارے رولز ہیں, ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں, یہ آپ کے پاس موجود رولز ہیں. کچھ رولز مینڈیٹری ہیں جن سے آپ چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے, جو بلڈ ریلیشنز ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کل سے میں آپ کا والد نہیں ہوں, اس رول سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے. لیکن کچھ ایسے ہیں جو مینڈیٹری نہیں ہیں, لیکن ہر رول میں آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. تو میں آپ سے کہوں کہ آپ اپنے آپ کو, چونکہ ابھی آپ پیرنٹ کی حیثیت سے بیٹھے ہیں, تو اسی رول کو کنسیڈر کیجئے اور اپنے بچوں میں سے کسی ایک بچے کو تصور کر لیں کہ آپ 80 سال کے ہو گئے ہیں اور آپ کی 80ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے, اور آپ کا وہ بچہ جس کو بھی آپ نے تصور کیا ہے آپ کے بارے میں کیا کہے, وہ آپ اپنے ذہن میں سوچ لیں. آپ کے بارے میں وہ اس دن آٹومیٹکلی کیا کہے وہ آپ سوچ لیں. آپ کیا سننا چاہیں گے اس سے, وہ آپ اپنے بس سوچ لیں. اور اس کے بعد اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں ہم. Looking forward to In your mind's eye, picture your 80th birthday. Picture the faces of your friends and family as they come to wish you well. All these people have come to honor you, to express their feelings, to toast a life well spent. 69, 70, 70. Imagine you are the person being honored, the subject of the speeches. What would you like the speaker to say about you, your life? What would you like them to say about your character and contributions? What achievements would you want them to remember? What impact would you like to have made in their lives? Thank you so much for always being there for me and supporting me no matter what I did. Paciência com as minhas travessuras, que hoje essas crianças, né, vó? Eu vou passar todo ensinamento seu para os meus filhos, vó. Obrigado. Eu amo a senhora. This is my beloved husband, whom I have loved for at least 70 years, even though we've been married 60 years. We met in elementary school. And it was love at first sight. And so 思い起こすとね、やっぱり親父の後ろ姿いつも心の中にあって、
それに励まされて今があるな、そういうふうに思います。ありがとう。誕生日おめでとう。みんなからね。バコで。Start living today with that picture of your own 80th birthday party clearly in mind. In that picture, you will find your definition of true success. I have found that it is extremely helpful to write down what you truly desire inside a personal mission statement. In that written mission statement, you clarify for yourself what ends you serve, what you want to be, your character, what you want to do with your life, your contributions and achievements. Your mission statement is like a personal constitution. It's the basis for making major life-directing decisions, as well as smaller daily choices in the midst of all of the ups and downs of life. Mission statements come in all forms and shapes. It doesn't matter what form it's in, as long as it uniquely expresses you. Some come in the form of a poem or a collage of pictures. Some are long, others might be shorter. A mission statement is not something you write overnight. It may take several rewrites, but you don't let that stop you. Several years ago, I remember thinking deeply about my own mission statement, one that I had developed many, many years before. I was sitting alone on a beach at the end of a bicycle ride. I took out my mission statement and I really thought about it very, very deeply. It took several hours, but at the end, you can't imagine how I felt such a sense of clarity, such a sense of renewed commitment, and such a sense of exhilaration and freedom. Once again, I knew what my life was all about. Viktor Frankl says, we detect rather than invent our missions in life. I like that choice of words. Detect rather than invent. You see, defining our mission really requires thinking through our deepest desires, our dreams, our sense of responsibility, our most intimate and satisfying relationships. Our meaning comes from within, from down deep within ourselves. As the poet Mary Oliver asks, doesn't everything die at last and too soon? Tell me, what is it you plan to do with your one wild and precious life? जी, क्या नोट किया आपने जो मैंने आपसे कहा था कि किसी एक बच्चे के बारे में सोचिएगा कि वो आपके बारे में आपकी 80वीं सालगिरह पर क्या कहे? आपने सोचा था कि वो आपके बारे में क्या कहे खुद से? जी, आवाज आ रही है आपको सबको मेरी? जी, you're audible. जी, यस। तो आप लोगों ने सोचा कि वो आपके बारे में क्या कहे? तो अब आप सोचें कि अब आप ऐसा क्या करेंगे कि वो जो आप चाहते हैं आपके बारे में कहे वो खुद से कहे। जी, तो आप अब अगले 5 से 10 साल में उसके लिए ऐसा क्या कर रहे होंगे कि वो ये सब कुछ कहे। और आखिर में उसने कहा कि हम डिटेक्ट करते हैं अपनी जिंदगी का मकसद, इन्वेंट नहीं करते। हम डिटेक्ट करते हैं, इन्वेंट नहीं करते। और आज सुबह मैं पढ़ रहा था कि अगर हम चाहते हैं कि हम जिंदगी में कुछ करके जाएं तो रोजाना हमें सोचना चाहिए कि हम डेथ बेड पर हैं और हमारे पास आज का ही वक्त है जो है। तो हमें ना सिर्फ अपना जिंदगी का मकसद पता होना चाहिए, हमें अपनी फैमिली का भी मकसद पता होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी फैमिली क्यों बनाई, इसका मकसद क्या है, और हम सब मिलकर के इस फैमिली के मकसद को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, और हमारी अपनी जिंदगियों के मकसद क्या है। और ये बहुत
اہم بات ہے، کیونکہ زندگی کا مقصد ہونا، پرپس ہونا ہی آپ کو روزانہ اٹھاتا ہے اور محنت پہ اکساتا ہے. اگر آپ زندگی کے مقصد کے بغیر ہیں تو پھر مثال ایسی ہے جیسے جہاز بغیر رڈر کے، بغیر پتوار کے. تو جہاز کا پتوار نہ ہو، رڈر نہ ہو تو پھر کہاں جاتا ہے وہ؟ پانی کے جہاز کا اگر رڈر نہ ہو جس سے اس کی سمت کا تعین ہوتا ہے تو پھر وہ کہاں جاتا ہے؟ آپ سے سوال ہے. Lost in sea, it sinks. And same applies to our lives. لہروں کے بہاؤ پہ جاتا ہے. سیم ہماری زندگی کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ہم وقت کے بہاؤ پہ بہتے ہیں، ہم دنیا میں گم ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، اور دنیا جہاں ہمیں لے جاتی ہے ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں. یاد رکھیے گا، مردہ مچھلیاں ہی پانی کے بہاؤ پہ چلتی ہیں، زندہ نہیں چلتی. تو آج ہم طے کریں ایز فیملی کہ ہم سب ایز پیرنٹ اس پینڈیمک کے ٹائم میں جب ہمیں زیادہ وقت میسر ہے اکٹھے بیٹھنے کا، ہم اپنی فیملی کی مشن سٹیٹمنٹ، دا پرپز آف آر فیملی اینڈ پرپز آف آر ایگزسٹنس، ہماری اپنی ذاتی، اس کو ہم بنا لیں. شروع تو کچے پکے سے ہوگا لیکن ہو جائے گا. آپ پہلی اینٹ رکھ دیں گے. بالکل اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ ہمارا اینڈ ان مائنڈ، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن میں کہ میں نے تمہیں تخلیق کیا ہے اور اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ تم میری ثنا بیان کرو. لیکن پھر اتنا رحیم اور مہربان ہے کہ ہمارے ہر عمل کو اس ثنا کی کیٹیگری میں ڈال دیا ہے، اس حمد اور ثنا کی کیٹیگری میں ڈال دیا ہے. یعنی کہ اپنے فیملی پہ خرچ کرنا بہترین صدقہ قرار دیا. تو ہمیں مل کر کے، آپ میں سے کتنے لوگ کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہم اس پینڈیمک میں، اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں اپنی فیملی کی مشن سٹیٹمنٹ کرافٹ کر لیں گے، کم سے کم اس کی ابتدا ہی کر لیں گے اور لکھ کر کے اپنے گھر میں کہیں واضح طور پہ آویزاں کر دیں گے. اور اس سے پہلے آپ کو اپنی بھی بنانی ہوگی، بچوں کو بھی بنانی ہوگی. بچے بنا بھی رہے ہیں جنریشن میں نے دیکھی بھی بہت سے بچوں کی مشن سٹیٹمنٹس جو وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوں گی. کیونکہ ہم نے کہا نا، ہم ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، انوینٹ نہیں کرتے، بناتے نہیں ہیں. ہمیں بس پتہ چلتا ہے کسی دن کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے بنایا، میں یہی کام بہترین کر سکتا ہوں اور اسی سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. انشاءاللہ آپ کے رسپانسز آ رہے ہیں، یو ول ڈو، اینڈ ہم چاہیں گے کہ آپ لوگ شیئر بھی کریں بعد میں اس کو ہمارے ساتھ. آگے بڑھتے ہیں ہم. یہ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ فیملی کی مشن سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے، یہ کیوں ضروری ہے؟ ایز پیرنٹس آپ لیڈر ہیں اپنی فیملی کے، آپ لیڈ کر رہے ہیں، اور جب ہم لیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا کام ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں ہم اس مقصد پہ لوگوں کو جمع کریں، اپنی فیملی کے سب لوگوں کو اکٹھا کریں کہ یار یہ ہے ہمارا مقصد. اور جب اس پہ سب اکٹھے ہوتے ہیں، مشن سٹیٹمنٹ ہوتی ہے ہماری فیملی کی، ہماری اپنی، ہمارے بچوں کی، تو اور وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے. لکھا ہوا ہونا بہت ضروری ہے. کل اینٹس کے بارے میں بھی ہم نے یہی سنا تھا نا کہ جو نیگیٹو تھاٹس ہیں ہمارے اندر ان کو ہمیں لکھ لینا چاہیے.
تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ایک تقریر سنتے ہیں جو جان ایف کینیڈی نے امریکن سے کی تھی ایز لیڈر، جس میں وہ اپنی قوم کو یہ بات بتا رہا تھا کہ ہم چاند پر جائیں گے اور اس کے لیے یہ مصیبتیں بھی اٹھانی پڑیں گی، یہ پریشانیاں بھی اٹھانی پڑیں گی، اور ہم کیا کیا کر رہے ہوں گے. ایسے ہی جب ہم فیملی میں آتے ہیں تو ہم اپنی فیملی کو بھی ایسے that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. مشن اسٹیٹمنٹ ہمیں مدد دیتا ہے کیا آرگنائز اینڈ میجر دا بیسٹ آف آر انرجیز اینڈ اسکلز، ہماری توانائیاں اور صلاحیتیں ان کو بہترین انداز میں ناپنے اور ان کو ترتیب دینے میں مدد دیتا ہے اگر ہماری زندگی کا مقصد ہو. تو یہ تقریر ہم ایک ساتھ سنتے ہیں ان کی، جس میں وہ اپنی قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم چاند پہ جائیں گے اور چاند پہ جانے کے لیے ہمیں کیا کیا مشکلات اٹھانی ہوں گی اور کیا کیا ہم کریں گے. ایسے ہی اب اس کو فیملی کے تناظر میں دیکھیں تو آپ کا بھی یہی رول بنتا ہے کہ جب بھی کوئی کام ہو تو فیملی کو اس پہ الائن کرنا، ان کو آن بورڈ لینا کتنا ضروری ہوتا ہے. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. We shall send to the moon 240,000 miles away from the control station in Houston, a giant rocket more than 300 feet tall, the length of this football field, made of new metal alloys, some of which have not yet been invented, capable of standing heat and stresses several times more than have ever been experienced, fitted together with a precision better than the finest watch, carrying all the equipment needed for propulsion, guidance, control, communications, food, and survival on an untried mission to an unknown celestial body, and then return it safely to Earth, re-entering the atmosphere at speeds of over 25,000 miles per hour, causing heat about half that on the temperature of the sun, almost as hot as it is here today, and do all this, and do all this, and do it right, and do it first before this decade is out, then we must be bold. جی مائی کون ہے جی؟ تب آپ کا رسپانس اس میں بڑا اہم ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ اپنی بات بیان کر رہے تھے تو زیل اینڈ سپارک بھی، ان کے جملوں کی انرجی بھی بالکل جی. میرین فیصل، کنسلٹیشن آف مشن گیوز اے ویژن اینڈ پونڈرنگ. سنرجی، بالکل سنرجی ہمیں زیادہ آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے. پچھلے دنوں میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ خاص پرندہ سائبیریا سے پاکستان آتا ہے، پاکستان کے ان گرم علاقوں میں آتا ہے، اور اس کا فلائٹ ٹائم 80 آورز ہے، کنٹینیوس 80 آورز، 80 گھنٹے مسلسل اڑتا ہے. اور وہ جو 80 گھنٹے اڑتا ہے اس کو جو انرجی چاہیے، تو سائنسدان حیران تھے کہ اس کے جسم میں 80 گرام آف فیٹ ہونا چاہیے، جبکہ اس کی باڈی میں تو جو فیٹ ہے وہ تو 72 گرامز اونلی ہے. تو یہ پہنچتا کیسے ہے؟ کیونکہ وہ جس روٹ سے آتا ہے ایک دفعہ اڑنے کے بعد وہ اتر نہیں سکتا، کیونکہ سمندر پہ سے وہ آ رہا ہوتا ہے. تو انہوں نے نوٹ کیا کہ یہ پرندے وی فارمیشن میں اڑتے ہیں، جس سے ہر پرندے کو 71% ایکسٹرا فلائٹ ٹائم ملتا ہے. وہ 71% زیادہ اڑتا ہے. اور جب وہ سائبیریا سے اڑ کے پاکستان پہنچتا ہے
तो फिर भी उसकी बॉडी में 8 ग्राम ऑफ फैट मौजूद होता है, यानी कि रिजर्व फ्यूल भी मौजूद होता है, जबकि उसको 8 ग्राम की शॉर्टेज थी, लेकिन जब वो यहाँ पहुंचता है तो 8 ग्राम उसके पास रिजर्व भी होता है. टुगेदर वी अचीव मोर. फॉर टुगेदरनेस वी नीड टू अलाइन. हमें एक लाइन पे लाना होगा अपने आप को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली में मौजूद अफराद को. उसके लिए हमारा मकसद होना, फैमिली का मकसद होना, वालिद और वालिदा का पर्पस ऑफ लाइफ होना, और बच्चों का फिर. क्योंकि जब तक हम मॉडल नहीं करेंगे तब तक नहीं सीखेंगे. मॉडलिंग ही सबसे अहम और सबसे मुअस्सर तरीका तदरीस है, मॉडल करना. अगर हम मॉडल नहीं करेंगे और कितने ही वाज़ और नसीहत कर लें, नहीं सीखेंगे. प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मॉडल किया करते थे, मॉडलिंग. ग़ज़वा उहद में जब सहाबा ने इंसिस्ट किया कि आप बाहर आके हम जाके लड़ते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा बख्तर पहन करके आ गए. तो सिर्फ उनके अंदाज से ही सहाबा कराम को अंदाजा हो गया कि हमने गलती कर ली है. तो ऐसे ही अगर हमारी ज़िंदगी में, हमारी फैमिली की ज़िंदगी में कोई पर्पस क्लियर होगा और हम उसको अलाइन कर लेंगे, यानी कि हमारे घर में हर फर्द उससे अलाइंड होगा, तो एक बेहतर, एक मुअस्सर फैमिली की सूरत में हम नज़र आएंगे. जी, तो आगे बढ़ते हैं हम. यहाँ इसके यहाँ टेक अवे है जो मसूद साहब आपसे अभी शेयर कर लेंगे. आप सब लोग डाउनलोड कर लीजिएगा अभी, और ये आपने करना है विद योर फैमिली. मसूद साहब. जिंदगी में स्ट्रगलिंग मोमेंट्स वजह बनते हैं नई अपॉर्चुनिटीज के. तो कहते हैं स्ट्रगल्स आर साइन पोस्ट फॉर अपॉर्चुनिटीज. जहां स्ट्रगल है इसका मतलब है वहीं एक और साइन लगा हुआ है कि यहाँ एक अपॉर्चुनिटी भी है. आज हम एक स्ट्रगलिंग मोमेंट से गुजर रहे हैं जहां से कभी कोई नहीं गुजरा, और हम ये अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं कि आने वाली नस्लें भी ना गुजरें. तो मैं आपके साथ इससे पहले कि हम स्ट्रगलिंग मोमेंट की बात करें, आपके साथ एक वीडियो शेयर करना चाहता हूं. आपका बड़ा अहम रोल है एज पेरेंट, और ये हमारी एक वीडियो है जिसमें कोलोराडो से एक प्रिंसिपल पेरेंट्स एज पार्टनर के ऊपर बात कर रही हैं. आप हमारे पार्टनर हैं, इस तालीमी इदारे के सबसे अहम पार्टनर हैं आप. इसी पे हम बात कर रहे हैं, आपके साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं, देखिए, एंड देन फिर हम इस पे बात करते हैं. आवाज नहीं आ रही? हाँ, नहीं सर, नहीं आ रही. ओके, लेट मी चेक. अब आ रही है आवाज? जी, अब आवाज आ रही है? सर आपकी आ रही है, वीडियो की नहीं आ रही. स्क्रीन शेयरिंग नहीं हुई. स्क्रीन शेयरिंग की नहीं आ रही. जी जी जी. Dr. Sarah Gould, who's the Franklin Covey family and okay. Thank you.
Hello and welcome to another Leader in Me Weekly from home. Today we speak with Dr. Sarah Gould, who's the Franklin Covey Family Engagement Specialist, as well as an active administrator with the Weld County School District in Colorado. How are you, Dr. Gould? Good, thank you. Good. Today, parents as partners. Talk to us about this key paradigm. Absolutely. So during this time, we're all experiencing the unknown. For the first time, we are bringing learning into the home in a way that we've never even been able to conceptualize, both as teachers and parents ourselves. And one of the biggest paradigms that we can have that will just immediately start to relieve some of our stress and pressure that we put on ourselves is seeing parents as a child's first teacher and seeing parents as partners in their child's education by creating authentic learning experiences right at home. And those learning experiences can be simple as sharing old recipes with their children and having the children engage in those recipes. It can be as simple as bringing out a board game and playing board games with your children that you used to play. It can be sharing an old movie that you loved when you were their age, especially great for teenagers, who might be struggling to get out of bed each day. Or just having kids listen to music that you listened to growing up or music you like and comparing and contrasting it to what they have. It's not about necessarily this pressure we put on ourselves to assess and make sure that we're teaching to the content, but it's about looking at what are the standards of learning. Right? We as teachers do this best. We can create these project-based experiences on learning targets and standards, and parents can do it with their child in a way that doesn't feel like an extra, but just part of the way that they do business at home. Creating those learning experiences that are really authentic, that's what our kids are going to remember during this time. It's not going to be the tests and the worksheets we create. It's going to be what authentic learning opportunities can we just enhance that's already happening at home. So it's us sharing, number one, our belief in their genius. And number two, our belief that they are their child's first teacher. What about accountability to learning? It's still there, right? But the way we view accountability also has to change. We're used to creating assignments and formative assessment checks along the way that in a formal classroom they work, but at home are very challenging. And so a great way to do that is to create choice boards, for example, where students are able to pick authentic learning activities that they can do at home with what they have. And students and parents can snap photos of the finished product of whether it's a game board or a recipe or just a simple, challenge them to do a blog post about the movie that they watched together and comparing and contrasting that movie to the movies that come out now. It can be simple finished product because it's not about the finished product as much as the learning experience that the child's having alongside their parents. It's all about co-creating this experience to get to that new learning. In many ways, we prepared for a moment like this, haven't we? Empowered learning. Dr. Gould, thank you for giving of your time today. For everyone else, see you next time. जी, parents as partners or as teachers. आपको इस वक्त इस पेंडेमिक के टाइम में जब घर पर हैं बच्चे, आपको और ये याद भी यही रखेंगे जो आप उनके लिए लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। आपको इन्वॉल्व होना है, आपको वो गेम्स खेलनी है इनके साथ, और हमने बहुत सारी गेम्स आपके लिए बना के भी रखी हुई हैं। आज मैं आपसे शेयर करूंगा कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के खेल सकते हैं ओवर द 7 हैबिट्स। ठीक है जी, हम आगे बढ़ते हैं अपने मेन कोर्स के साथ भी हम आगे बढ़ते हैं। और ये वीडियो हम देखते हैं जब अपॉर्चुनिटी जब स्ट्रगलिंग पॉइंट्स आते हैं जिंदगी में, तब अपॉर्चुनिटीज पैदा होती हैं।
The key to discovering jobs to be done is to find what we call struggling moments. And that is, somebody is trying to get a job done, and they just have a point in time when they need to have progress. And that struggling moment helps us understand much clearer what is the job that they're trying to do in their lives. One of the things you can do is observe how your customers use a product in a different way that wasn't intended. People are using your product to do other things that you didn't even have in mind when you developed the original product. Another way to identify a job to be done is what we call negative tasks. That is, identify things that people actually have to do, but they don't want to do it. They're looking for something that can get the job done without personally needing to intervene with the things that they don't like to do. A third tool is to look for people who are doing workarounds. It turns out that jobs to be done are very insistent in that they're not going to say, well, it's just fine if you don't do this job. But rather, the job to be done speaks to us by saying, well, if there isn't a way to get the job done this way, then do it that way. And if that doesn't work, then try this. And what you find yourself doing is to do workarounds. Looking for the workarounds is a very helpful way to understand, oh my gosh, there's a job. And they need something to get that job done. You can see it right there in their lives. When you see a workaround, pay close attention. It's a clue that there must be an innovation opportunity there to be seized. Another tool to discover a job's to be done is not to examine what existing customers are doing with the product, but rather look at non-consumption. That is, people who would like to do something, but it is impossible because they don't have the money or the time. Non-consumption can be the most fertile opportunity for innovation. Just get out in the wild. There is very little information about jobs to be done that is on spreadsheets in office buildings that are air-conditioned. You have to go out and watch what people are doing and crawl into their lives and look inside of their minds and their hearts to see what is it that causes them to do what they do. You can succeed in innovation if you deeply understand the progress that customers are trying to make in their lives. जी, तो आपने नोट किया कि कैसे स्ट्रगलिंग मोमेंट्स इनोवेशन का सबब बनती हैं. ये जो उबर है, ये फूड पांडा है, these are the result of struggling moments. आपने कुछ अर्सा पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एयरवेव देखी, एयरलिफ्ट देखी, and और so many different innovations. ये सारे क्या हैं? ये स्ट्रगलिंग मोमेंट्स के नतीजे में वो हल हैं जो पैदा हुए, जो हमारे सामने आए. तो आज इस स्ट्रगलिंग मोमेंट में भी मायूस होने की जरूरत नहीं है. ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है, ब्लेंडेड लर्निंग है. अब स्कूल खुलने के बाद भी ब्लेंडेड लर्निंग हिस्सा बन जाएगा. फेस टू फेस लर्निंग के साथ हम ऑनलाइन भी पढ़ रहे होंगे. सो ब्लेंडेड लर्निंग, इसको 10-15 साल बाद शायद ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आता, लेकिन इस पेंडेमिक ने हम सबको जूम से मुतारिफ करा दिया, और जूम के लिए तो ये पेंडेमिक एक अपॉर्चुनिटी बन गया. और इस वक्त दुनिया की टॉप 5 एयरलाइंस के रेवेन्यू से ज्यादा अकेले जूम का रेवेन्यू है. यानी उन 5 एयरलाइंस का पूरा रेवेन्यू जमा करें तो जूम इज जनरेटिंग मोर. तो ये जो टाइम है, ये अपॉर्चुनिटी है. इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू इनोवेशन, फॉर चेंज इन आवर लाइव्स. अपनी जिंदगियों में बदलाव लाने के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है. हमें जो गिला रहता था कि वक्त नहीं मिलता, अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम किया कि हमें वक्त बाय फोर्स दे दिया है.
تو اس کو ہمیں اپنے بہتری کے لیے استعمال کرنا ہے، نہ کہ ہمیں اس کو ضائع کر دینا ہے کہ یہ دوبارہ نہیں آنا. تو یہ جب ہم اسکول میں ہول چائلڈ ڈیولپمنٹ پہ کام کرتے ہیں اور بچوں کے پاس ایک مقصد ہوتا ہے، تو ایسے ہی ایک اسکول جو کہ نارتھ کیرولینا میں موجود ہے، وہاں کے بچوں نے پرپس بنایا کہ ہم نے کینسر کے مریضوں کی مدد کرنی ہے، پرسنل مشن اسٹیٹمنٹ. تو اس کے اوپر ہم مشن اسٹیٹمنٹ کے اوپر آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کر رہے ہیں، اس کو دیکھیے اور نوٹ کیجئے کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں. At North Henderson, we believe that our personal mission statements help give direction to our lives. I will change my mind so I can change anything. My mission is to be the change I wish to see in the world. Have courage and be kind. My mission here at North is to preserve domestic tranquility. To help others by always having a smile on my face and being nice to everyone to brighten their day. Fill your life with adventures, not things. Have stories to tell, not stuff to show. I will inspire moments of happiness and optimism. Thank you for what you do for the fight against cancer. Welcome to our 11th night versus cancer. You guys are doing amazing work, and I just want you to know how grateful I am and all the children and their families whose lives will be impacted are. It's a great legacy of love that you're creating here. Over 11 years, you guys have raised a ton of money that has had tremendous impact. Again, that's an investment, and that's a real legacy of love. So thank you very much. Together, we are leaders and we encourage one another. We have found our true north. Have you? Please unmute yourself. جی یہ تھوڑا سا ہاں جی. So as family, do we know our true north? Our family's true north? Yes. جی تو ہم نے اپنی فیملی کا ٹرو نارتھ سیٹ کرنا ہے، اپنا ٹرو نارتھ سیٹ کرنا ہے، کیونکہ وہی ہمیں مدد دے گا روزانہ اپنے بستر کو چھوڑ کر کوشش جاری رکھنے میں. جو ہم کہتے ہیں نا موٹیویشنل اسپیکرز یا موٹیویشن کہتے ہیں، موٹیویشن انہی کو چاہیے ہوتی ہے جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. جن کی زندگی کا مقصد ہو، they don't need motivation because they have their ان کے اپنے پاس موجود ہوتی ہے موٹیویشن کے لیے ریزن. اور جن کے پاس کوئی نہیں ہوتا ان کو تقریروں کی ضرورت ہوتی ہے، موٹیویشن کی تقریریں سنتے ہیں. اینڈ دین بٹ
ہوتا کچھ نہیں ہے کیونکہ پرپس نہیں ہوتا. اگر ہمارے پاس پرپس نہیں ہے, ہماری زندگی میں ہمارا کوئی پرپس نہیں ہے, تو پھر ہم اس کشتی کی طرح ہیں جس کشتی کا کیا نہ ہو, رڈر نہ ہو. جی, آپ کی طرف سے کوئی سوالات ہیں تو ہم اس کو آنسر کر سکتے ہیں. مسعود صاحب نے Q&A کی طرف سے آپ کو اسٹرگلنگ مومنٹ کا جو ٹیک اوے ہے وہ بھی شیئر کر دیا گیا ہے, اور یہ ڈاکومنٹس آپ ابھی ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. چیٹ باکس سے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. وی چوز ٹو گو ٹو دا مون, اس کا بھی آپ کو جو ہے ٹیک اوے وہ اپلوڈ کر دیا گیا ہے. اور جو ہماری جنریشن کی ٹیم ہے, اگر وہ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے جو بھی آپ کا کمیونیکیشن چینل ہے اس کے ذریعے بھی اگر آپ والدین کو بھیج دیں گے تو اٹ ول بی اے گریٹ ہیلپ ٹو اس کہ وہ اس کو پھر پریکٹس بھی کر سکیں. جی انشاءاللہ. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کیونکہ اوپر چلا گیا ہے. آپ چیٹ کو اسکرول کر کے اوپر جائیں گے تو آپ کو نظر آئیں گے. ادروائز جنریشن کی ٹیم آپ سے شیئر کر لے گی جو بھی آپ کا کمیونیکیشن چینل ہے, میتھڈ ہے, میڈیم ہے. جی, میں مسعود صاحب سے ریکویسٹ کروں گا, ہم نے ایک نئی ریسورس بھی لانچ کی ہے. ابھی امیڈیٹلی اویلیبل نہیں ہے, اٹس آن ٹرائل پیریڈ بٹ گوئنگ ٹو بی اویلیبل, اینڈ دیٹ از لیڈر ان می ایٹ ہوم. لیڈر ان می ایٹ ہوم گھر پہ آپ کے لیے ایز فیملی ان 7 ہیبٹس کو سیکھنے اور پریکٹس کرنے اور شیئر کرنے کے لیے ہے, اور یہ ویب بیس بھی ہے اور موبائل ایپ بیس بھی ہے. ٹھیک ہے جی, مسعود صاحب آپ اپنی اسکرین شیئر کر کے ہم سے شیئر کریں گے. اور اس میں خاص بات میڈم غزالہ اینڈ فیملی آپ کو نظر آئیں گے. اور ہمارے لیے بھی فخر کی بات ہے کہ لیڈر ان می کے کانٹینٹ میں پہلی چیز جو پاکستان سے شیئر ہوئی وہ جنریشنز کی طرف سے ہے, اور میڈم غزالہ نے اس کے لیے کافی محنت کی اور اس کو ریکارڈ کرنے, پینڈیمک کے دنوں میں اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے اسٹرگل کی, فار وچ وی آر تھینکفل ٹو ہر اینڈ فیملی. اینڈ لیٹس واچ ٹوگیدر کیا کہہ رہی ہیں وہ, اور پھر ہم اس ریسورس سے آپ کو انٹروڈیوس کرائیں گے. دس از leaderinme@home.org. مسعود صاحب شیئر کیجیے گا اور اس کو انلارج کر دیجیے گا. Welcome to the Leader in Me at Home lesson called Honesty. I am Ghazala Siddiqui, my husband Irfan, and I have 4 children, alhamdulillah, of whom 3 are married. We are blessed with 7 grandchildren. We have with us our mom, our son Shoaib, and daughter-in-law Samiha, and the 3 of our lovely grandchildren, Iman, Mustafa, and Nusaiba. We live in Pakistan and are fortunate enough to be living together in the same house, mashallah. I love being a grandmother. The challenges and the experiences remind me of my own grandparents with increasing gratitude each passing day. I think we all know the importance of being honest. Understanding the value of honesty and the consequences of being honest are an important part of a child's development. It's important for us as parents to teach and reinforce honesty in a kind and patient way and be an example of it ourselves. We as a family believe in the age-old phrase, honesty is the best policy. If we really want to give our best, start and end with being honest. This lesson is designed to help you teach and demonstrate honesty at home. Your family will learn what it means to be honest, why being honest can be difficult sometimes, what lying reveals about our character, how people who speak the truth earn the trust of others, and what the consequences are when you develop a habit of being dishonest. No materials are necessary for this lesson. You will simply share a story provided in your own words.
and have a discussion based on the story. At the end of the lesson, you can check your children's understanding of what you have taught. Having honesty at home is so important. Keep practicing this with your family and your relationships will get stronger. Enjoy this lesson. Thank you, Mustard साहब. इसमें अगर आप इसी को थोड़ा सा ऊपर ले जाएं ताकि हम वालिदैन को दिखा सकें लेसन कैसे तरतीब दिया गया है. आप शेयर कर रहे हैं. वेबसाइट शेयर कीजिएगा. जी, अगर आप देखें तो आपको लेसन नजर आ रहा होगा ऑनेस्टी. इसमें आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए. आपने अपने बच्चों के साथ बैठ के ये कहानियां शेयर करनी है जिसमें दी गई हैं और उन कहानियों की बुनियाद पे हमने कुछ सवालात दिए हैं और आप बच्चों को इंटरैक्टिव इसमें इन्वॉल्व करके इंटरैक्टिवली उनके जवाबों को दिखा सकते हैं. उसको स्क्रॉल करेंगे नीचे. ये आ नहीं रही, मेरे पास नहीं आ रही आपकी स्क्रीन. आ गई, ठीक है. आप डिस्कनेक्ट हो गए. ओके. अच्छा, जब तक मसूद साहब दोबारा आते हैं हमारे साथ और हमसे शेयर करते हैं, मैं एक और रिसोर्स आपके साथ शेयर करने लगा हूं और ये आप अभी भी एक्सेस कर सकते हैं किसी भी वक्त, और वो है leaderinme.org. leaderinme.org. ये जब आप लगाएंगे तो ये आपके सामने इस वक्त मेरी स्क्रीन आ रही है. इसमें आप कोविड-19 रिसोर्स सेंटर पे जाएंगे, रिस्पांस सेंटर पे जाएंगे तो आपके सामने ये मेन्यू खुलेगा और यहाँ से आप फैमिली रिसोर्सेज पे चले जाएंगे. leaderinme.org, then COVID-19 resources, and then for families. अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने आपके लिए बिट साइज लेसन्स भी रखे हुए हैं. आप अपने बच्चों के साथ खुद अपनी फैमिली में इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं. कार्टून्स हैं 7 हैबिट्स के, एक्टिविटी ब्लॉग्स हैं और एलाइम टॉक्स हैं. अगर आप नीचे चले जाएं तो ये आपके लिए मुख्तलिफ वीडियोस, आर्टिकल्स, जैसे भी वर्चुअल क्लास लेते हैं बच्चे, कैसे इन्वॉल्व किया जाए, इसके ऊपर आर्टिकल्स मौजूद हैं. मुख्तलिफ वीडियोस हैं जो बच्चों के साथ कार्टून की सूरत में आप शेयर कर सकते हैं. टीनेजर्स के लिए वीडियोस हैं, अगर उनके साथ आप बैठ के इकट्ठे वक्त गुजार रहे हो तो देख सकते हैं. एम्पावरमेंट क्या होती है, ये मैंने आपसे वीडियो शेयर की. पेरेंट एज पार्टनर, ये भी वहाँ मौजूद है. एम्पावर्ड लीडरशिप रूटीन्स हैं, ऐसी रूटीन्स जो आप बच्चों के साथ शेयर करें. ठीक है जी. टाइम फॉर लीडरशिप, ये मिरुल समर है. शी इज द लेडी जो सारी तहरीक के पीछे है. यहाँ से इन्होंने सारा सिलसिला शुरू किया था कि कैसे बच्चों को मौसर किया जाए. 6 ideas for virtual classroom learning, 7 habits reflection, choose your response. ये वीडियो है, आप इस वीडियो को एक साथ देख सकते हैं अगर आप चाहें तो. हम ये आपके साथ देखते हैं. 4 ह्यूमन गिफ्ट हैं. अल्लाह ताला ने हमें 4 ह्यूमन गिफ्ट से नवाजा है और इन्हीं 4 ह्यूमन गिफ्ट्स की वजह से अल्लाह ताला हमसे सवाल भी करेगा. देखते हैं इसको. Welcome to Leader in Me Weekly. Today on the show, we have a very special guest, Erica Tyson. Welcome, Erica. Thank you, John. Now, among the many roles you play, you are an amazing Leader in Me coach. Thank you. And she is also part of the professional learning action team for us internally as coaches. So once a month, you walk us through typically one of the 7 habits practices. And so from that, the idea came up, why not lead all of us through a couple of these practices? You up for it? Yes. All right, take it away. Thank you. All right, well, let's start at the beginning with habit 1,
be proactive. And the very first practice, which is to pause and respond based upon principles and desired results. So not based upon how someone came at us or our mood. This practice has the potential to change this moment and every moment after. So I invite you now to think of a situation in which you are commonly reactive, a situation where you could really use some air. Let's take it through these paces. There are 4 unique gifts that we have. The first is self-awareness. Notice what's going on with you in that time. Are you frustrated? Are you tired? Maybe feeling defensive. And remember, self-awareness is not self-abuse. Just notice what's happening with you in those moments. The second gift is imagination. What else might be possible? What could we be missing in looking at this situation? The third is conscience. What is really being asked of us? What is that still small voice saying? And the fourth gift is independent will. Remember, we're in control. We're in control of how long we stay angry, how long we hold on to a thought, even the tone of our voice or the expression on our face. Now, if you've gone through that practice and noticed it was a little bit challenging, you probably picked a worthy challenge. So if you're doing this practice alone, maybe journal. What did you notice? What insights came up for you? If you're with a friend, take a little while to share your insights, and we'll see you when you get back. So, how was that? How was that for you, John? For me, not easily done. This can be challenging. Absolutely. Absolutely. It's called a practice for a reason. Yeah. This is not how we typically respond. So if it was difficult for you, just remember, with more practice, it'll get better. And please be gentle with yourself. Well, this has been fantastic. I am looking forward to more of these. There's 20 practices with the 7 habits. So we'll see how many you want to do. All right. Thank you. जी बी प्रोएक्टिव समझे आप रुक जाएं पॉज थिंक एंड रिस्पॉन्ड और ये उस लम्हे के नताइज को और आने वाले वक्त के नताइज को भी बदलने की सलाहियत। तो एक और चीज जो मैंने आपसे शेयर करनी थी वो थी लीडर इन मी ऑनलाइन और आप सॉरी लीडर मी एट होम। तो मैं आपसे शेयर कर रहा था, मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ। आपके सामने में स्क्रीन आ रही होगी। जी ये आपको नजर आ रही है स्क्रीन? अगर आप देखें तो ये वीडियो जहां पर मैडम गजाला की वीडियो थी, देन इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। ऑनेस्ट का होना मतलब क्या है, ऑनेस्ट होना कभी कभी मुश्किल क्यों होता है, हमारे कैरेक्टर के बारे में झूठ बोलना, सॉरी झूठ बोलना हमारे बारे में क्या, कैरेक्टर के बारे में क्या बात लाता है, ये सारी चीजें हैं। देन हैबिट कनेक्शन, हमने हर हैबिट के साथ इसका कनेक्शन जोड़ा है। मटेरियल क्या चाहिए आपको, कुछ नहीं चाहिए। प्रिपरेशन कोई खास नहीं है। देन देयर इज अ स्टोरी, ये कहानी बच्चों के साथ शेयर की जाए। साथ में हमने आपको सवाल भी दिए हैं कि कहानी सुनाने के बाद सवाल क्या करने हैं। फैमिली डिस्कशन है, देन मिल करके एज फैमिली डिस्कस करना है। और फिर स्टोरी है दोबारा, टेल द स्टोरी ऑफ अ टाइम यू आर डिसऑनेस्ट, यानी कि हम कभी डिसऑनेस्ट हुए थे। बी श्योर टू टेल व्हाट लेड यू टू मेक दैट डिसीजन एंड व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट डिसीजन वाज। अपनी प्रैक्टिसेस, हम कभी ऐसा कर, हमने भी ऐसा किया और हम कर बैठते हैं, इंसान है तो क्या हुआ था। देन एक्टिविटी है, अगर आप इसको देखें, एम्प्टी पॉट,
then who will be the new emperor. یہ ساری کہانی ہے. دین اس کے بعد سوالات ہیں جو اپنے بچوں سے پوچھ سکتے ہیں. دین کلوزنگ ہے. دین ینگر چلڈرنس کے لیے یہ سینیریو 1 ہے. آنسر یہاں کرنا ہے انہوں نے. نو ناٹ آنیسٹ, یس آنیسٹ. اگر کہتا ہے کہ بچے نے کہا یہ کریکٹ آنسر, جو بھی کہانی سنائی گئی تھی اس کی بنیاد پہ سوال ہے. تو یہ ریسورس بھی اویلیبل ہو جائے گی, لیکن آپ کو دا مومنٹ leaderinme.org از اویلیبل. ٹھیک ہے جی. دس از آل فرام مائی سائڈ. اگر آپ لوگوں کا سوالات ہیں, نہیں تو اوور ٹو لیڈر ان می جنریشنز ٹیم. جی تھینک یو, جزاک اللہ. آپ لوگ آئے, بیٹھے, سنا, کل کی پریکٹس کر کے آئے. آج جو آپ کو کام دیا رہا ہے ہوپ آپ لوگ کر کے آئیں گے. اور کچھ ریسورسز بھی ہم نے شیئر کی نا. تھینک یو میرین فیصل, میڈم نوین. آپ یہاں سے چارج لے لیں سیشن کا اینڈ اس کو لیڈ کریں ٹورڈز اینڈ. تھینک یو ویری مچ. Right, Jazakallah Niazi Saab. I think we had a parent, Zed's father raised their hand. I don't see them right now. جی ان سے پوچھ Please, لیتے if you ہیں. have any questions, please post it on the chat box or you may raise your hand. Okay, so we would just like to say that it was a very enlightening session, and we would invite our principal, Dr. Ghazala, to please share her point of view. Right? Right. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. And assalamu alaikum to everyone. Jazakallah khair, Fazal Saab, for your lovely session, I would say. And alhamdulillah, I'm really glad and I'm really pleased that the connectivity, mashallah, be improved. So you did work hard overnight and the things were quite smooth, smoother than how they were yesterday, mashallah. So thank you so much, especially for that. I was just thinking that, to conclude, it's so important for us to see that as to what the basic 7 habits that we are talking about, and we are talking about the in-depth and practicing and all that. But they are, as Fazal Saab said, and as many of you agree, that they are basically so much in alignment with our own beliefs as Muslims, basically. And even not only for Muslims, but for anyone who's principle based, the 7 habits, they really relate very well. And can you just close your eyes and imagine that at our homes, like, if we have these 7 habits along with our values, our own values that we are so dear to us and that we derive from Quran, of course, Quran and Sunnah. So, and these 7 habits, if we develop these habits and have the values from here, so how can we, if each home does that, each household practices that as much as possible. Of course, it cannot be perfect, but actually making an effort for all those 7 habits based on our own values, that can you imagine what kind of a household would it be? And how peaceful would it be? And how productive would it be? And how much of giving can be done from that household, basically, inshallah, and how happy would it be? Likewise, can you imagine closing your eyes and thinking of at Pakistan level, national level, even leave that aside, even mohalla level, ye hamare mohalle mein jo hai na, if you imagine, house, this leader in me, کہ ہمارے 7 habits along with our values other when grain ہو جاتے ہیں, لوگ پریکٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں, دل کتنے صاف ہو جاتے ہیں, relationships کتنی positive ہو جاتی ہیں, اور پھر لوگ کتنے خوش رہنا شروع. We learn to live happily actually when we have those principles in place. So
and the whole world, likewise you can see at national level, at international level. But leave aside the uncontrollables. हम सिर्फ ये देखें अपने घर में अगर हम ये practices कर लें इंशाल्लाह, शुरू कर लें और मेहनत लगती है, but मेहनत फिर इंशाल्लाह that will bring a lot of happiness in our households, and that's what really makes me happy. Just thinking of that, that inshallah then we all will be very much in peace with our own lives, with our families, with our children, with our husbands and wives, and with our parents and the surroundings, inshallah. So that is one thing that I just wanted to everyone to imagine. One of the endowments, one of the gifts, as we talked about, is to human beings by Allah is imagination. So we should imagine to set our goals, inshallah. The other thing was that I would really like to thank the, of course, Kavi team, because they have really worked hard, and there's another session now at 3 p.m. So we had one yesterday, and inshallah today will be the last in the second session. And in future, inshallah, this is what they are committed to, we are committed to, we are working as a team, as Generations and Franklin Covey, that inshallah we would be holding such sessions so that we go together, the school, the household, the community, parents and the community. So we go together so that the culture, we can transform the culture gradually. It all happens very gradually. But it's still, at least we should be very happy with ourselves and thank Allah that we have started with that, basically. So with that end in mind. So we started doing that together as one team, mashallah. And inshallah, that's how, that's why we actually went for Leader in Me at Generations, because it supported very strongly our own vision and objectives of quality education that included academic excellence based on values and leading to leadership qualities. So it automatically fitted in, mashallah. So Jazakallah Fazal Saab and Jazakallah parents. I was really so happy to see all of you here. We have a much more a stronger group in the afternoon. Even yesterday, alhamdulillah, I reached to 300 plus, mashallah, in the afternoon. Of course, we understand in the mornings आप लोगों की अपनी commitments भी हैं, but nevertheless हमारा एक चीज में साथ होना और फिर ये understanding एक साथ पैदा करना synergize कर देता है चीजों को. So thank you so much for being here. I hope and I pray that each one of you is keeping well. Each one of you, Allah Ta'ala सबको अपनी हिफाजत में रखे और इस contagion से हमें साथ खैर और आफियत के निकाले इंशाल्लाह. और हम बस अपना काम करते रहें और isolation के rules जो फॉलो करते रहें आगे इंशाल्लाह. Allah Ta'ala फिर मालिक अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह. So Jazakallah khair and thank you Generations team. Jazakallah khair. So that was the Genu team and the rest of the coordinators for this Leader in Me. And now today Ms. Mehreen and Ms. Naveen. So that was well conducted. Jazakallah. Thank you so much. See you again, inshallah. And keep practicing, please. Practice will make us perfect, inshallah. Assalamu alaikum to everyone. Thank you. Mehreen, there are a few questions. So उनको हम आंसर कर लें. Yes, sir. Question है मेरी मिशन स्टेटमेंट किसी ने मांगी है तो I ask them to share your email address and I'll send you my mission statement. And just to add on, Niazi Sahab, if they have children in the higher grade levels, तो school में mission statement के ऊपर बहुत बात हुई है. So I would recommend that parents discuss with their children and maybe they will help them write the mission statement. So that would be a way forward as well. अच्छा जी, ये एक और सवाल है, बिल्कुल ऐसे ही है. इसमें एक जो सवाल है कि I want to know a little more on focus and interest, two major challenges in learning and development. Naisab could share some steps, techniques and activities to help create interest and instill focus in child. For this, हमने बहुत सारी resources leaderinme.org पे जो स्पेसिफिकली इसी मामले पे बात करती हैं, इसमें कई आर्टिकल्स शेयर कर रखे हैं. कैसे होगा, आपको leaderinme.org पे जाके
फैमिली रिसोर्सेज में इन चीज़ों को देखना होगा. और मैंने अपना नंबर भी शेयर किया था, अगर फिर आप चाहें उसके बाद भी मुझसे हेल्प लेना चाहें तो आप ले सकते हैं. वहाँ leaderinme.org पे जाएंगे, फैमिली रिसोर्सेज में फोकस और इस आजकल के दौर में सोशल मीडिया एंड फोकस एंड इन सब को एड्रेस किया गया है और बड़ा प्रोफेशनली एड्रेस किया गया है. उसको आप देखें. अगर उसके बाद भी आपको ज़रूरत पड़े तो फिर मैं अवेलेबल हूँ आपको आंसर करने के लिए, उसको मज़ीद एलैबोरेट करने के लिए. ठीक है जी. और जिन्होंने मुझसे मेरी मिशन स्टेटमेंट डिमांड की थी, मैंने उनसे कहा था कि अपना ईमेल एड्रेस शेयर कर दें. एक और है, उनकी भी आ गई है, तो ये मैं अपने पास सेव कर लेता हूँ, मैं उनको ईमेल कर दूंगा. ठीक है जी. Jazakallah Niazi Saab, your session as always was very enlightening and बहुत अच्छा ये रहता है कि we get practical tips to take back and practice with us. So Jazakallah once again. We'll end with dua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Ameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khairan. Jazakallah. Thank you. Jazakallah. Allah Hafiz. Okay.